Good evening, Adab, Namaskar, and Sat Sri Akal. Welcome back once again to the third season of Inspirational Interview Series, where I feel privileged to invite eight fabulous females from different walks of life who share with us the gold nuggets from their success stories and inspire the world. My dear friends, it's the third season, and we are super excited to celebrate upcoming Women's Day. Well, for all those who are meeting me for the first time, I'm Sandeep Bogra, a life and relationship coach, certified under Tony Robbins, speaker and author, and founder, Someone You Need. Well, as I always say, these amazing personalities, the Wonder Women whom I feel privileged to invite and interview every night, have something special about themselves. And the one I'm going to bring to the world tonight is someone who creates magic, not just with numbers, but with cards, with her intuition, guidance to eventually enlighten your path in life. Yes, I'm talking about a world famous numerologist, tarot card reader, crystal healer, and lots more, all the way from Amchi, Mumbai, Miss Rupinder Shettigar. Welcome, Rupinder ji, to the show. Thank you so much. Thank you so much. It's a gratitude feeling to have my own best friend sharing the panel. Gratitude and lots of love to you, Sandeep. Thank you. Privileged to have you here again. Gratitude. I know it's a different feeling again to interview one of your friends. And as I always say, whenever such conversations happen, they are so lively, they are so full of energy and excitement that we tend to Absolutely. lose the track. Actually. But the beauty about the conversation today is going to be that someone like you, who is guiding people to walk the right path in their life, Pleasure. will definitely show us the way how to go about things using the power and the magic of so many modalities known and unknown to the world. Yes, correct. So, before we dive into that, let us understand more about you. So, why don't you tell us something about yourself? First of all, happy Holi to everybody. I'm so very happy to be together on the colorful day, which we both are as a personality. Though we are 3 and 6, but then we are absolutely very lively personality, which I love about you and you love about me. So happy colorful day to everybody who's watching us and who's going to join us later. Uh, Knowing about me, first of all, happy Women's Day, because we will not be meeting each other. So happy Women's Day in advance. You are meeting or talking or going to interact or going to have some little surprises from both of us tonight. You're speaking to Rupinder Shettigar. I am born Sadarni, a Sikhni, married to a Mangalorean who is Shettigar from Mangalore. I am a numerologist, as my introduction is already done. I don't need to repeat it again. I call myself Sevadar because having a blood of Sikhism in me, we believe in Seva, and that is pure Seva. So I call myself Sevadar. But definitely, the most beautiful thing about everything tonight, the past and the future, is that I'm uplifting lives, which is very beautiful journey. Very, very beautiful experience, and very grateful for having the services. Absolutely. And I feel the audience is super excited already. We have the comments flowing in from everyone around both of us. My sister says, "Good evening, nice to see you." And there Love we you. have the lovely Ananya around there bidding a big hello from the room next door. That's my daughter, my angel, my life. Yes. And we have lots more to understand about angels and how they impact our lives. But that's gonna come something down the line. So stay tuned, stay excited. So when you Yes. say you are a Seva Dharni, right? What I understand you are into right now in terms of numerology or tarot card reading and lots more. It's not where you began, right? Definitely. Definitely. The blood in me flowing is I'm an entrepreneur. I was, it's a big journey. But yes, it's a 365 turn that took in the pandemic, basically. So tell us more about it.
like what you were into in the past and what really inspired you to come into this field? The inspiration is definitely my mom. Uh, I only owe my life to two women. One is who's given me the birth, brought me into this world, and the other who's hold my hand and still along with me is my ma Sherawali. So all gratitude to two of my mothers who have brought me here, and we have long way to go ahead. I was born in a very below average middle class family, definitely a sick family, very, very grounded and very kind hearted parents. So everything is come in my genes, I believe. It's come into my upbringing. I have seen my parents being very kind to people, very caring for people, very helpful to people. My mom is being a person who has got people married, who's set people's houses, who's got people admitted in schools, in medicals. She's supported people in living. I mean, I can go on if I have to speak about my mother because it's a Women's Day. The strong inspiration when whenever I speak to her, I'm always very cheery because I've lost her 10 years back. But then the inspiration, the power in me, my mother who lives in me, I have had like beautiful life even after being in below average middle class family life. I don't remember my parents ever saying no for anything that we have ever asked for. Yes, I lost my dad in 1998, where me and my brother weren't even married. So everything is come through with my mother, and in between we had to physically part, but she lives within me as a spirit. And till I'm also an educationist, which I think we haven't added. I was running a school for almost more than 20 years until pandemic. And then in between those online things came, and I got little time because I was always very busy person working. I'm a workaholic. You don't give me food, I can survive. You don't give me any shopping, don't give me any bribing, I can survive, but I cannot survive without work. So in pandemic I got a little time uh, to think, to look around. And what I observed was that I was a little scared about people because I'm a human activist also. More than 20 years I have my own registered NGO, so I was always into social activities. So in pandemic what hit me hard was that people will not be able to take this stop, the full stop in their lives. So I started with the free counselings to people. Being three number, we are like born counselors. We're good at talking. So I'm number five from the life path, very good communicators. So I always hold people very strong when it comes to counselings. So I started free counselings to people, and I think I must have done almost 150 free counselings at that time during pandemic. But then when I was speaking to people, I realized that how many times I will speak to people, how many times I will hold them, how many times I will be able to help them. So what is the problem that is actually there in their lives? And I think from there, the journey of learning, the journey of numerology, you and me so fortunate to have the best mentor, Aviral Pandey sir, who brought us together. And then the way we are learning things, the way we are practicing things, the way we are uplifting lives, it's been amazing. From there, everything started, and then continuity. My dasha, the personal year this year is Ketu. Ketu brings in lot of spirituality. You got to get into spirituality if you want to save yourself from other side effects. So as Ketu started, I was always an angel person. So the time this time started of Ketu, suddenly I was doing a tarot card workshop with my sir, and in between, suddenly these beautiful things came into my life. This is what we're going to surprise people today. So stay tuned. One lucky person, two lucky persons, Sandeep will decide, are going to get free angel card reading from me today. So these came into life, and then crystals, as you see, these are nutritions to your body. These are super magical, positive energies that support your life for only good, good, and good. So the journey continues. Awesome. So you've shared there are so many things you've experienced, like over 20 years rich experience as an educationist, and then that mindset which you imbibed from your parents, the feeling and the principles of serving the mankind.
is what really Yes. got you into this field today, where you are Yes. enlightening lives, guiding people with all the Yes. positive energy and aura you carry for yourself, Yes. Absolutely. right? Absolutely. But then getting into this field or switching your trade or starting something new altogether, earlier or now, especially during or post COVID, must have had its own fair share of challenges. Yeah. What were really those, and how did you overcome them? In life, I think I must have broke down hard for the first time when I closed down my school. When I decided that I will not be continuing and I will close down, and I was looking for some charity for the entire setup of my school, because when you have a school, you have a lot of good big amount of stuff, you know. So I was looking for free donations. I was looking for somebody who can just use all the stuff of my school for lifetime, because it has come from my mother from a very young age, Sandeep. She used to gather the poor people around, the poor children. She used to bring them home, give them bath, put them nice clothes, make them sit and make them study. She was like, we lost her when she was almost 65, and she was running a play school in Indore of her own at that time also. मतलब till the last breath वो education देती हुई गई हैं उनके लिए. Though she could not study herself because her mother wasn't keeping well and she was the eldest child, she could not study जितना उनको पढ़ना था, तो वो उन्होंने छोड़ा ही नहीं, कभी छोड़ा नहीं. एंड थ्रू आउट हर लाइफ मतलब उन्होंने एजुकेशन शेयर की है. तो वो टाइम मैं अभी भी याद करती हूँ, तो आई रियली गेट वेरी इमोशनल, संदीप. आई थिंक आई वॉज इन डिप्रेशन एट दैट टाइम because it took my heart out that I'm not going to teach. I am not going to do the same thing again. And I think 3 4 months were very hard, and I didn't know what is going to happen. But I will tell you, Sandeep, there was something that was already triggering me for before 2 3 years of life, and I used to tell my husband that there is something that is coming to me, or I want to do, and something this is not satisfying. There is something that my soul needs. I don't know, something, because when you are getting into spirituality, it doesn't happen overnight. One has to understand it doesn't happen overnight. It's a process, it's a practice, it's a dedication, it's a surrender attitude, and it takes good long time, and everybody has a different time span. For everybody it's different. So मुझे पता था, मैं हमेशा से स्पिरिचुअल थी, हमेशा से बहुत ज़्यादा भगवान और ये चीज़ों पे मेरा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहा है. But I had never in my dreams thought that I can become an angel card reader or a numerologist. Never. I always thought that I'm a human connection person, because I believe talking is one thing which is very very important. Everybody needs to open up to speak. मुझे संदीप को बताना पड़ेगा कि संदीप, I want you to listen to me. Sandeep, I want you to give me time. Sandeep, this is what you're doing is I'm not liking it. Sandeep, can we change this? There is a communication which is very very important in every relationship. In every relation, I was always knowing that I'm a communicator and I can do that job very well, and I was always doing it. So पता नहीं ये होना था, ये डेफिनेटली होना था. बट वो जो आपने मुझे क्वेश्चन किया कि वो टाइम, my family is seen that. So actually, those who know me, they know me that I'm a very strong woman. Only few know how soft and emotional I am the other side. Only the few know. And I don't want everybody to know. Only my people should know that. And I Oh, guess thank we you have so the much. blessings Yes. from one of your gurus, Shri Yes, Kiran Bedi ji. she's my teacher. She's the one who's taught me from nursery till 10th standard. She is not an matlab, she's not an gadget freak person, but somewhere she's tried her best to join me here. And she said, and she's the one person who I always share my achievements. And she's the one person. She was actually a good bestie to my mother also, and she was my teacher also. So she's the one person who's always putting all the love blessings on me, and I'm so proud that I'm connected to her. Kiran aunty, thank you so much for joining me here, and I love you. Taruna ji Thank you. says, awesome to see you, Rupinder ma'am. Taruna ji, yes, she's a sister to one of my colleagues, and we have recently connected. And
Yes, thank you so much, Tarunaji. Thank you so much for joining. I love you all those who all have joined. Thank you. So everyone's super excited about the way we My have just people are. started, and uh, My people are. Shashi Gupta ji always joins us with all the blessings and love around. He's Thank you so much. asking to enlighten us the importance of numbers and main characteristics of different numbers. Yes. Um, should we talk about numerology, or we have question and then we can go on to it? How do you want to do it? So I suggest you can first simply tell the audience what is life path number or the other side of things, like I how want to we tell people. I want to tell people what is numerology all about. precisely. On a broader So level, let's understand what's numerology about. Then yes, maybe you can take up some example yes, randomly, and we'll yes. see how it goes. Perfect. So, as I said, when I was connecting people, when I was doing counselings, when I was talking to people, there were certain things that I thought, why is it a problem here? Why is it this is happening? Why is this repeating? Why is he not able to make money even after having putting in so much of hard work? Why is this happening? Why is there is relationship not going well even after I'm talking, the counseling happening? Because certain cases were taking little मोर टाइम एक्स्ट्रा. तो तब मुझे ऐसा लगा कि जड़ पे चलते हैं, इसकी रूट पे चलते हैं कि ये होता क्यों है, या ये रिपीटेटिव क्यों हो रहा है, या ये इतने एफर्ट्स या इतने पैसे या इतना पढ़ के, या यू नो पीपल स्टडी पुट सो मच ऑफ मनी इनटू एजुकेशन एंड देन दे आर स्ट्रगलिंग टू फॉर लिविंग. आई एम अ वेरी सेंटिमेंटल पर्सन, सो मैं बहुत ज्यादा डीप कनेक्ट हो जाती हूँ कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है यार बेचारे के साथ, है ना. सो देन I was outsourcing the reports from somebody. That also got a very important thing. Then I, मतलब अभी एकदम से तो आप जादूगर बन नहीं सकते, तो आप, मुझे ऐसा है कि आई एम अ वेरी, मुझे इंस्टेंट चाहिए होता है सब कुछ. तो then I started asking for help from people, and I had one of the known person who was doing it. So I was outsourcing the reports, and then I was helping the person with counselings. As I said, I always thought that I was a very good communicator. So when those reports were coming, I was not satisfied. I mean, I'm still connected to those people, and after me becoming a numerologist, there is a zameen asman ka farak in the work I do and the work market does. I don't want to boast about myself. I don't want to put down anybody, but I'm just trying to tell you that I was not satisfied. So फिर मैंने सोचा खुद ही करते हैं. And then I was scrolling, and then we were blessed to have Aviral sir, and then I learned from him, and फिर पता चला कि आप जिस नंबर से बॉर्न होते हैं, जो नंबर से आप बॉर्न होते हैं, दैट इज योर ड्राइवर नंबर. ना बॉर्न कौन से नंबर से होते हैं? हाँ, जैसे आई एम बॉर्न ऑन द 30th of June. So if I'm born on 30th of June, I am a 3 number person. Okay, so if I say I'm born on 30th June 1976, so when we I will just try and show it. So if I write my date of birth like this, 30th June 1976. So this 3 is the driver. Okay, that is the number you're born. That is the personality that the world see you like. आप उनको 3 नंबर की पर्सनालिटी के जैसे ही दिखेंगे और आप वैसा ही बिहेव करेंगे. आपके एट्रीब्यूट्स, ट्रेड्स आपके 3 नंबर के ही होंगे. ओके, नाउ व्हेन आई +3 +6 +1 +9 +7 +6, संदीप मेरी एज पता चल जाएगी सबको ऐसे तो. Nobody's having पता a चल calculator, so don't गई. worry. I'm beautifully 46 years old. So anybody wants to know the real age of me, I'm beautifully 46 years old. And I have a 21-year-old son, and I have a 13-year-old daughter. Okay, so when you Wonderful. add up to 3 plus 6 plus 1 plus 9 plus 7 plus 6, you get your life path number. Now, what is life path number? My life path, as I said, driver is 3. My life path is 5. Okay. Now, 3 is the most auspicious number in all the numbers. It's a Guru ka number. It's Jupiter. But in Hindi, it is called Guru ka number. So when it is Guru ka number, Guru is Gyan. Guru is sharing knowledge. Guru is sharing intellect, wisdom. You know, it's a creativity का नंबर. तो ये सारी चीजें जब मुझे अपने बारे में पता चली, मैं एक चीज बताऊंगी कि बिफोर आई वाज नोइंग अबाउट न्यूमरोलॉजी, इन बिटवीन आई यूज्ड टू गेट वेरी डाउन हार्टेड. यार मैं लोगों के लिए इतना करती हूँ, यार लोग सामने से उतना वैल्यू नहीं करते, या ना लोग मतलब दे डोंट गिव बैक एंड ऑल दैट. बट व्हेन आई रियलाइज्ड आई एम अ 3 number person, आई एम गुरु का नंबर, आई एम एन ऑस्पिशियस नंबर, I have sent into the world to give. Because a guru will never think कि मैं इतना दे रहा हूँ, कि मैं इतना दे रहा हूँ, कि मैं उतना दे रहा हूँ.
He has to give a flow of giving. And 3 number is a giver number. 3 number will selflessly only give you, and give you. So when you know this, you love yourself more. So this is how I fallen in love with numerology more. So I hope you understand कि आपका जो फर्स्ट नंबर होगा, जैसे संदीप आपका फर्स्ट नंबर इज, ड्राइवर नंबर इज 6. 6. सो ये शुक्र है, हम गुरु हैं, ये शुक्र है. शुक्र इज सच एन इम्पॉर्टेंट नंबर. I tell you, number 5 and number 6 are two very, very important numbers everybody should have in their lives. If you do not have, if you are still single, if you're getting married, if the one person is having 6 and 5, and if the other person is not having it, it can still balance the relationship. So person who's not having it should always get married to a person with number 6, because I'm doing Why don't you lot. take some example, some random date of birth which doesn't have 6, Okay, so and you let's pick see how that chart reads. okay, you pick any, and give me the details, send me the details, and I'll do it. Okay. Send me on my phone, that is also okay. Yeah. I think we will not share the names or anything, we will just discuss the chart. Okay. Sure thing. Yeah, so So give here we me. have one, and I've just sent it to you. Okay. Okay, I got it. That's very nice that we will discuss one of the charts, which is a very good thing. Okay. Dr. Priyanka Now, Channa from US, she was our guest yesterday, says, I okay. am a 3-2 and completely relatable with whatever you say. I Always love you so giving. much. The more we will talk, the more we will stick to this subject. You will know all the beauties of the numbers. But every number has a good bad side also, because 3 number का वो अच्छाइयाँ तो मैंने बता दी. 3 number is very particular number. उसको जरा सा भी कचरा नहीं पसंद, डिसिप्लिन के बिना नहीं चल सकते. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं 3 number की जो बाकी के numbers को हमारे साथ रहने वालों को टॉलरेट करनी पड़ती हैं. But anyways, I love my number. Okay, so I have one of the grids here. Okay. Now this grid, should I show the grid so that people understand? Just a Yeah, you grid. can just show the grid. Yeah, of course. This is the Loshu grid we make, which is made with the date of birth. This is basically made with any of your date of birth. Now this, as you So have what's the seen, date of birth you have taken? We can just tell the date of birth without telling the name or other details. the date of birth is 5th October 1984. All right. Okay, with that we have made the grid, which is this. Okay, now if you, I will say and you will understand, it has number 4. Okay, I'll show you the other grid also, which all the numbers, you will know that which numbers should be there in the place. So this, it is supposed to be. Am I clear? No. Yeah, No. that's it. Stop. Yeah, No, perfect. no, this. Hmm. These are the numbers that is supposed to be in the grid. All Fair the enough. numbers. Okay. So this chart which we have taken, okay, this chart has a 4. This 4, any number in the grid which is one time is an average. It's like it will give you only the 50% effects of it. So number 1 is 4. 4 is only single in the grid, so it is giving 50%. Now 50% में क्या होता है कि ये person average hard worker होगा, ये एवरेज डिसिप्लिन पे होंगे, ये एवरेज गोल सेट कर पाते होंगे, और डेफिनेटली हार्ड वर्क करना पड़ता ही होगा इनको किसी ना किसी रीजन से, बट सेल्फलेसली 100% नहीं आता होगा. मतलब ये रोज फॉर एग्जाम्पल लाइक आप रात को सोच के सोएंगे कि कल सुबह तो मैं वॉक पे 5 बजे जाऊंगी ही जाऊंगी, तो ये जिनके पास बिल्कुल ही एक भी बार 4 नहीं होगा ना, वो तो सुबह उठेगा ही नहीं, वो तो बोलेगा कल से जाऊंगा, आज नहीं, थोड़ा सो लेता हूँ फिर कल जाऊँ. ये क्या करते होंगे, एक दिन जाते होंगे, फिर 2 दिन गुटली मारते होंगे, फिर एक दिन चले जाते होंगे, दैट वे. सो हैविंग 4 विच इज राहु,
ओके, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यही आपको डिसिप्लिन देता है और यही आपको फोकस देता है लाइफ में और यही आपकी प्रोडक्टिविटी निकालता है. सो हैविंग 4 इन योर चार्ट, every number I said is very important to have in your own grid, but इस नंबर का प्रोडक्टिविटी से डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप है. अगर आप पैशनेट ही नहीं हो, अगर आप गोल सेटर ही नहीं हो, अगर आपने डिसिप्लिन ही नहीं किया कि मैं इतने बजे उठ के वहां पहुंचूंगा, तो आप ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी 100% आपकी आएगी ही नहीं, है ना, क्योंकि आप पहुंचोगे ही नहीं टाइम पे वहां पर. उसके नीचे एज आई सेड 3 नंबर है. नाउ 3 नंबर इज एज आई सेड जुपिटर, विजडम, नॉलेज, है ना, क्रिएटिविटी. इस चार्ट में जिसका हम कर रहे हैं उनमें नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी पर्सन नहीं होंगे, ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं होंगे, क्योंकि इनका 3 भी नहीं है और इनका 7 भी नहीं है. 3 इज गुरु एंड 7 इज केतु. तो जिनके पास दोनों नहीं होता है वो, आई विल ऑल्सो टॉक इफ वी हैव टाइम. देर आर प्रैक्टिसेस बेसिकली. सब मंदिर जाते हैं तो मैं भी जाऊंगा, है ना, सब बाबा जी करते हैं, कीर्तन सुनते हैं तो मैं भी करूंगा, है ना, सब उपास करते हैं, फास्टिंग करते हैं तो मैं भी करूंगा. आई विल टेल यू, देयर इज नो सच थिंग दैट ये ऐसा ही होगा, ये वैसा ही होगा, बिकॉज आई एम कनेक्टेड टू गॉड, टू एंजल्स, टू यूनिवर्स फ्रॉम माई सोल. मैं रूल्स पे नहीं जाती, मैं कॉल्स पे जाती हूँ. मैंने संदीप को थोड़ी देर पहले बताया, आई गेट कॉल्स ऑफ एवरीथिंग. मेरा दिल किया, मुझे कॉल आया, मुझे ये करना है तो करना है. जैसे हमने एंजल कार्ड को लास्ट मिनट ऐड किया, हमको करना है, सो दैट्स अ कॉल आई गेट. आई एम टेलिंग एवरीबडी, डू इट, डोंट डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट. सो कोई जिनके पास 3 और 7 नहीं होगा, जैसे गुरु और केतु नहीं होगा, तो ये इसलिए करेंगे क्योंकि शायद ये गॉड फियरिंग, मतलब डर के मारे करेंगे कि मैं कर लेता हूँ क्योंकि मुझे करने बोला है, क्योंकि रेमेडी है, क्योंकि ये नहीं करूंगी तो ये हो जाएगा या हो जाए, करूंगा या करूंगी, यू नो. सो नॉट हैविंग 3 and 4, अब नॉट हैविंग 7, मैं आपको ये बता रही हूँ, जैसे 3 नहीं है तो क्रिएटिविटी में इतना इंटरेस्ट नहीं होगा. 3 नंबर नहीं है तो संदीप बहुत कुछ सीखने में इंटरेस्ट नहीं होगा. जैसे हम, मतलब मैं, आई कैन डू लॉट ऑफ लर्निंग्स थ्रू आउट माई लाइफ बिकॉज आई एम अ 3 नंबर पर्सन. तो मैं करती ही रहूंगी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आएगा, बिकॉज आई एम नंबर ऑफ नॉलेज. जिसके पास 3 नहीं है वो नया कुछ सीखने का उसको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होगा, जो है उतने में वो सेटल हो जाएगा. पढ़ाई कर ली तो ठीक, एजुकेशन कर ली, माँ बाप के प्रेशर से कर ली तो ठीक है, उतना. ये नया कुछ सीखने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे जिनका केस हम कर रहे हैं. अब 7 नंबर अगर ग्रिड में है तो वो थोड़ा सा तकलीफ दे देता है केतु, क्योंकि केतु स्पिरिचुअल नंबर है. अब केतु को स्पिरिचुअलिटी मस्ट है, ओके. अब केतु आपको बार बार बोलेगा भगवान का नाम ले, कीर्तन कर, गुरुद्वारे जा, मंदिर जा, काइंडनेस कर, हेल्प कर, ये केतु बोलेगा. तो जिसके पास 7 होता है उसको लाइफ में थोड़ा सा, लाइफ के जो मटीरियलिस्टिक लाइफ होती है वो थोड़ी हार्डवेयर मिलती है. तो ये 7 का अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वी स्टिल से ओके, ऐसा है. नाउ अंडर 3 देयर इज 8. अब इनका डबल 8 है. नाउ 8 इज शनि. शनि इज ऑल्सो अ फाइनेंस मैनेजर, ओके. शनि इज ऑल्सो अ प्लैनेट विच इज स्लो, वो स्लो चलता है, बट इट इज ऑल्सो अ प्लैनेट, इट इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ बिजनेस. अब इस केस में 2 8 हैं, तो ये बहुत अच्छा फाइनेंस डिसीजंस इनका बहुत अच्छा होगा. ये बहुत रूट पे R&D करके, रिसर्च पूरा करके ये फिर फाइनेंशियल डिसीजंस लेते होंगे. और अगर ये कोई फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं तो इनके फेल नहीं होंगे. तो मतलब शी और ही whoever the case is, ये बहुत अच्छे से सोच समझ के फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे. इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी होगी. ये एक अच्छा है इस केस के बारे में. इनके पास मतलब सिंगल फाइनेंस 9, वर्ल्ड में ही अच्छा कर सकते हैं अगर चाहें तो. हमने, हाँ, ये 5 और इनका, एक सेकेंड, हमने लाइफ पाथ, आप मुझे ऐड कर दो, आपका मैथ्स फास्ट है तो. 6 7 मुझे ऐड कर दो. 5 + 1 + 1 7 + 9, 7 + 9 7 is 7 + 9, 16 16 okay. 16 + 8, 24 24 + 4 is 28. 28 28 मतलब ये एक तरफ से 5 है और ये एक तरफ से 1 है, राइट? 1 है ना. तो इनका ड्राइवर जो है वो 5 है. अब जैसे मैंने पहले भी बोला था, 5 नंबर, जैसे मेरा लाइफ पाथ 5 है, या आप जो मुझे सुन रहे हैं या जो मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपके साथ इंटरैक्ट या कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, दैट इज द पावर ऑफ 5. आई लव 5 because it is also a number of money. It brings in lot of money, it brings lot of growth, success, career and definitely communication. जिसके पास 5 नहीं है
उसके ऊपर मुझे बहुत दया आती है, क्योंकि दोनों चीज़ों का लॉस है। एक तो वो कम्युनिकेशन में पुअर हो जाते हैं, ऊपर से उनके पास पैसा, सेविंग्स नहीं होगी उनके पास। वो पैसा बना लेंगे, फिर खत्म कर देंगे। वो बिजनेस कर लेंगे, फिर लॉस करके बंद कर देंगे। वो जॉब पे रहेंगे और फिर जॉबलेस हो जाएंगे। सो दिस इज द साइड इफेक्ट ऑफ नॉट हैविंग फाइव। नाउ दिस पर्सन इज ड्राइवर से नंबर फाइव, बट 84 है तो 40 प्लस ऑलमोस्ट, है ना? A little less, yeah. लिटिल लेस, राइट? तो अब लाइफ पाथ और आपको ड्राइवर का ये भी बता देती हूँ कि जैसे इनका फाइव है, तो ड्राइवर फाइव जो है वो 40 की एज तक आपका एक्टिवेट होता है। मतलब आपकी लाइफ का हर चीज प्रोमिनेंटली आपके ड्राइवर नंबर के हिसाब से होगा, होगा ही, बाय हुक और क्रुक। ऐसा नहीं है कि मेरे बोलने पे होगा या कुछ और होगा, 5 नंबर के हिसाब से ही। तो ये जो भी केस स्टडी हम जिनकी कर रहे हैं, ये बात करने में बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। ये जब मैं बोलती हूँ बात करने में बहुत अच्छे होंगे, तो मैं बताना चाहती हूँ जिसका भी हम केस ये कर रहे हैं, please use your communication. I tell everybody this: when you are a number five person, do not misusing this number, because very few fortunate people have five as their life path or driver. So if you are, whoever is watching us and जिनका हमने, संदीप जी ने जिनके केस करवाए हैं, please use your communication. You can talk very well, and person who is good communicator can do wonders in any field, in any situation. मतलब आपको मैं ये बता रही हूँ कि कहीं झगड़ा भी हो रहा होगा, अगर आप वहां पर जाएंगे आप उसको पीस कर सकते हैं। आप बात करके चीजों को सक्सेस कर सकते हैं, आप बात करके डील्स क्लोज कर सकते हैं, बिकॉज यू आर अ नंबर फाइव पर्सन। सो प्लीज यूज इट, एंड इफ यू वांट यू कैन कनेक्ट टू मी एनी टाइम। यू कैन check my number, and I think we're going to share it also. Now coming back to 40 plus की बात, आप हो जाएंगे नंबर वन। नंबर वन, फाइव हिंदी में बुध बोलते हैं, मर्क्यूरी बोलते हैं इंग्लिश में, वैसे ही नंबर वन इज सन, इज सूर्य। Now, Surya is a karmic number. Please understand, Surya is a karmic number. Why? Because Surya doesn't have a choice whether he has to come out. आज मेरा मन नहीं है, चंदा मामा आप थोड़ा डबल शिफ्ट कर लो, आज मैं नहीं आता, मैं कल आऊंगा। He cannot do that, है ना? It's a service. I always say Sandeep is come as a number six because of his past life karmic journey or deaths, or his whatever life he had. I am come as number three is my karmic journey, my karmic debts, or my account of karmas from past life. So if you are come with a particular number into this world, you need to understand that you need to serve that number. प्लीज, व्हेन आई से फाइव, डेफिनेटली यू वर लकी, बिकॉज आपने शायद बहुत हार्ड वर्क किया होगा पास्ट लाइफ में, या आप बहुत ज्यादा आपने स्ट्रगल्स किए होंगे कुछ, तो गॉड वांट्स टू ब्लेस यू, इसलिए उन्होंने आपको 5 नंबर पे भेजा। फिर उन्होंने बोला कि जो भी XYZ पर्सन है, इनके पास इतना सब कुछ आ गया तो कहीं इनमें अहंकार ना आ जाए, तो उन्होंने आपको सन बना दिया। सन में डबल अहंकार होता है, I need to tell you, but I always say one is a karmic number, it's a sun ka number. We all know that is आग का गोला. I tell people I am not a manipulator. I will never talk very pleasy with you. I'm a straight person because I want to do good for people. इसीलिए मैं उनको सच बताती हूँ. Whoever this person is, you're going to lead your life like number one now. Number one is a born leader. Number one is very confident. Number one is a karmic number. Number one is a number of marketing, you can say. As I said, leadership. But as I said, it's Aag Gola. Ek Surya is Aag Gola. And I can see that this person has 3 1. Okay. One time, as I said, 50% average. 2 times is 100%, which is very good. When 2 times you have 2 times, जैसे मैंने बोला इनके पास डबल 8 है, मतलब फाइनेंस का 100% बेनिफिट वाला, मतलब पॉजिटिव साइड। जब 2 की बाद तीसरी बार कोई भी नंबर रिपीट हो जाता है, फिर वो माइनस पे काम करना शुरू कर देता है। मतलब अगर 3 बार हुआ तो माइनस, 4 बार हुआ तो और माइनस, 5 बार हुआ तो और माइनस। Advice to this person is, I am 100% sure because I bang on my study, I bang on my chart study and what I speak. ये इंसान बोल के चीजें खराब करता होगा जरूर इनकी, क्योंकि सिंगल फाइव भी है, 100% बुध नहीं है, तो यहाँ क्या होता होगा, जो चीज बोलनी है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि एवरेज पे बुध है ना। अगर आपके पास डबल फाइव होता तो आप बहुत अच्छा करते, लेकिन 3 बार 1 होने की वजह से आप सोचिए, आग का गोला 3 times, एटीट्यूड 3 times, ईगो
3 टाइम्स। सो जब कोई चीज ज्यादा हो जाती है, जैसे पंजाबी में कहावत भी है, ज्यादा अत जो होता है वो बुरा होता है, वैसे आपको थोड़ा सा अपना टेम्परामेंटल इश्यूज जो है उसको थोड़ा कंट्रोल करना है। आपको लैंग्वेज पे अपने थोड़ा कंट्रोल करना है, क्योंकि आप बोल के चीज़ों को खराब करते होंगे श्योरली, है ना। हम चाहिए तो हम आगे कनेक्ट करके आपका बहुत बेटर कर सकते हैं, बट एज आई सेड आपका लाइफ पाथ 1 होने वाला है 40 के बाद। आपको ये समझना है कि आप कभी भी अपने मुंह से किसी को ये नहीं बोलेंगे कि संदीप मैंने तेरी जिंदगी बनाई है, मैंने किया इसलिए ऐसा हुआ, रुपिंदर मेरी वजह से तेरा भला हुआ या मेरे वजह से तेरा ये काम हुआ। नेवर से दैट। ऑलवेज कीप इन माइंड, कभी भी किसी को ऑब्लाइज मत करना कोई भी चीज करके, एहसान मत जताना कुछ भी करके, बिकॉज यू आर अ कार्मिक नंबर, यू आर कम इन टू दिस वर्ल्ड, सी सन इज टू स्प्रेड लाइट, you are brought into the world to spread life, है ना, to brighten up life, forget spread, brighten up life, whoever this person is। जैसे मैं अपने नंबर को लेके इतनी ज्यादा प्यार और रिस्पेक्ट और इतना वैल्यू डालती हूँ, आप भी डालना शुरू कर दीजिए, बिकॉज 5 और 1 दोनों वेरी गुड नंबर। आपको हम एक आदमी दें, 10 दें, 100 दें, 1000 दें, आप बहुत अच्छी लीडरशिप कर सकते हैं। एटीट्यूड ज्यादा है उसको बैलेंस कर लेना, ईगो थोड़ी सी ज्यादा है उसको थोड़ा बैलेंस कर लेना। ईगो होना इज गुड, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए डेफिनेटली कुछ चीजें कुछ परसेंटेज तक कुछ हद तक होना बहुत अच्छा है, बट आई थिंक कि खुद को भी ये चीजों की रियलाइजेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊंगी कि आप गलत कर रहे हैं, खुद को भी हमको पता होता है कि मैंने कुछ बोल दिया, सामने वाले को वो हर्ट हो गया। दो आई सेड फाइन नंबर आपका है, आप कम्युनिकेशन बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन मन आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ करता होगा। जैसे कि आपके पास सिंगल 9 है, तो करेज और विल पावर आपका थोड़ा वीक होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने रिस्ट पे लाल धागा हमेशा पहन के रखिए। अगर आप रेड कार्नेलिन पहन सकते हैं तो वेल एंड गुड, दिस इज रेड कार्नेलिन जो मैंने ये वाला पहना हुआ है, क्योंकि मेरे पास भी सिंगल 9 है। रेड कार्नेलिन रूट चक्रा पे भी बहुत अच्छा बैलेंस करता है, और प्लस आपका करेज और विल पावर। करेज विल पावर कम होने से क्या हो जाता है, इंसान थोड़ा डर जाता है। अगर कोई सडन सिचुएशन आ गई तो आप थोड़ा सा पैनिक एंजाइटी वाली चीज आपके अंदर आ जाए, हाय हाय ऐसा हो गया अभी क्या करूं, वो आ जाएगा सिंगल 9 होने की वजह से। तो आप या तो क्रिस्टल्स अगर पहनते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो सिर्फ ट्यूसडे के दिन किसी भी माता के मंदिर जाके आप अपने हाथ पे रेड धागा बांध के रखेंगे, और वो धागा हमेशा रेड रहना चाहिए। मतलब वो जैसे अपना कलर फेड करना शुरू करे, आपको बहुत अच्छे से उसको किसी मिट्टी में डालना है, और 3 टाइम्स उनको ग्रेटिट्यूड करना है, बिकॉज एवरीथिंग इज सर्विंग अस, एंड ओनली ह्यूमंस एक ऐसी चीज है जो कभी ग्रेटिट्यूड नहीं करता है पलट के किसी चीज के लिए। We are always asking for things. So I teach my people. I'm very fortunate to have very lovely people in my The Strong Minds, and we only speak the language of gratitude. सो ये धागा जब आप उतारे मिट्टी में डालें, उसको 3 बार थैंक यू बोलें आपको सर्व करने के लिए, और फिर एक फ्रेश धागा ट्यूसडे को माता के मंदिर से पहन लें आप। द सैड पार्ट चलिए इस इज डिस्कशन को आगे बढ़ सॉरी द सैड पार्ट इज कि ये जो एलिमेंट है, मेटल एलिमेंट है, ये कंप्लीटली एम्प्टी है आपका, जिसमें अगेन नंबर 6 आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर 2 है, नीचे 7 है, और उसके नीचे 6 है। अब ये जिनका भी चार्ट है, इनके पास 6 नंबर नहीं है। नाउ 6, आई डोंट नो वेदर शी इज मैरिड और शी वांट्स टू गेट मैरिड, बट इनको जिनसे भी शादी करनी है, ये बहुत संदीप प्लीज उनको कन्वे करना कि जिनसे भी शादी करें वो उनके पास सिंगल या डबल 6 होना बहुत जरूरी है, या वो खुद ही शुक्र का इंसान हो, तो ये मैरिज बहुत अच्छी चलेगी, बिकॉज इनके पास रिलेशनशिप का नंबर नहीं है। एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ इश्यूज इन मैरिज एंड रिलेशनशिप्स, people have not having 6, not having 6। I'll tell you what is number 2। when I say number 2 जो है वो okay here, number 2 is you, your father, your mother, your brother and your sister, but number 6 is you, your husband, your children, your social life, your status and your in-laws। तो जिनके 6 नहीं होते हैं उनके इन लॉज से भी थोड़े जमने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आई वॉन्ट टू टेल दिस पर्सन कि शुक्र की रेमेडीज करनी है। रोज क्वार्ट्स डेफिनेटली आपकी लाइफ में हर जगह रोज क्वार्ट्स होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 6 नहीं है आपके पास। आपके गले में, हाथ में, जैसे मैंने ये फिंगरिंग पहनी हुई है, ये भी रोज क्वार्ट्स है। आई तो लव रोज क्वार्ट्स एंड आई एम अ क्रिस्टल पर्सन, सो आई लव। बट आपके पास डक्स होने चाहिए आपके बेडरूम में, क्रिस्टल रोज क्वार्ट्स क्रिस्टल ट्री होनी चाहिए आपके बेडरूम में, रेड रोजेज होने चाहिए हमेशा, बहुत ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस होना चाहिए आपके बेडरूम्स में, एंड यूज रेड एंड पिंक टोन्स ऑन फ्राइडेज।
You are not allowed to gift a perfume to anyone in your life. You are under debt or shukr. अगर आपने दिया तो आप और कर्जे में आ जाएंगे. So never ever, whoever ask you, tell them straight that I'm not going to gift you perfume. You're not supposed to gift anybody perfume ever in your life. Rather, go and buy a perfume on a Friday for yourself and fill up yourself with all the fragrance all the time. I think you should always be filled with beautiful smell. Always. Right? 7 मैंने एक्सप्लेन कर दिया. आपके पास 2 भी नहीं है. आई डोंट नो विद दिस पर्सन इज हैविंग द हर हिज और हर पेरेंट्स, बिकॉज मस्ट बी अ पेरेंटल लॉस, बिकॉज 2 नहीं है, या फिर जमता नहीं होगा पेरेंट्स के साथ, कुछ ऐसा इशू होगा. या फिर शी मस्ट हैव लाइक मी, शी मस्ट हैव लॉस्ट. I love crystal too. There is Sarika Shinde, yes. And she has all the crystals that I buy. She uses all the crystals that I take. There's another person I'm waiting, pata nahi Jagruti aayi hai nahi. You will see their hands like me filled with crystals. Right? Yes. मैं Right. तो जा सकती So, हूँ. on a कोई broader भी. level, we have understood almost all the numbers, and I Yes. guess because बहुत से charts के request आ रहे थे, they wanted to Okay. understand how's the destiny or the life path number impacting us. But जिस तरह Okay. से आपने पूरा grid के सभी numbers बताए हैं कि एक number की क्या importance है connected to the sun, number two relation with the moon, how does it impact Emotions, absence or yes. presence, number three Number is guru two, का number number, two is also a number of intuition. Huh? Number two, people have very strong intuitions. They should listen to their heart. right? And just one thing here, females जिनके chart में number two नहीं होता, they are still having that intuitional powers by Yes, default. yes, yes, yes. Anytime, anytime, anytime. Women have that blessings, natural blessings है उनके पास intuitions की. इसीलिए तो वो बोलती हैं. कोई भी बात होती है तो आज मत जाओ ना बाहर आप, आज ऐसा मत करो ना आप, आज वैसा मत करो ना. Husband get irritated. Yes. Number three is related to Jupiter, Guru ka number. Number four Yes. related to Rahu. Yeah. Number five Mercury, Good. Yes. Budh. Number six Venus, Shuk. Shukra. Yes. Number seven is Ketu. Ketu. Yes. Number eight Shani. Saturn, Shani. Yes. And number Yes. nine Mangal. मंगल. मंगल. यस. जैसे मैंने बोला कि सन जो है वो आग का गोला है, वैसे जो 9 नंबर है वो चिंगारी है. सो एनीबडी हु इज कमिंग अप, अगर वो 9 है तो मैं बता सकती हूँ कि वो क्या करते होंगे. टेम्परामेंटल, जिद्दी, स्टबन. So with this we have understood how all these numbers play a role in one's life. और जो लोग आपसे connect करना चाहे, they can always WhatsApp you on हाँ जी. 915-295-1931. Cool. यस. So जर्नी पर वापस आते हैं आपकी. It's been very interesting and जिस तरह से आपने आज लोगों को enlighten किया है with all that knowledge you have, कहीं ना कहीं आपने angel cards का भी utilization किया है, right? अपने इस process में. So what role does angel cards play? Or maybe you can share some example or live Yes, I case will. with us. Yes, it's a very beautiful subject to talk to. मैं हर एक को बोलती हूँ, when people newly come and they meet me, I have two language to speak. One is universe and one is angels. तो आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि यूनिवर्स क्या है और एंजल्स क्या है. ये वही हैं जिनको आप पूछते हैं, जिनकी आप आज तक आराधना करते आए हैं, जिनकी आप भक्ति करते आए हैं. ये वही यूनिवर्स है. एवरीबडी, एवरी रिलीजन स्पीक्स वन लैंग्वेज के सब भगवान एक है, सब भगवान एक ही मैसेज देते हैं, सब भगवान एक ही चीज़ें सिखाते हैं. हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में डाल देते हैं. तो हम एक यूनिवर्स की भाषा बात करते हैं कि देयर इज समबडी, अ सुपर पावर एनर्जी सिटिंग अबव अस, वॉचिंग ओवर अस, प्रोटेक्टिंग अस, ब्लेसिंग अस. तो मेरे, जैसे मैंने कहा, मैं शुरू से ही बहुत स्पिरिचुअल टच रहा है. as I said, I work on calls also. There is always some kind of energy that is surrounded with me. Like अभी हमने already एक setup altar भी डाला है. So ये angels कौन है? जैसे अभी मेरी grandmother है, वो 2020 में एक्सपायर हुई थी with a very good age of 98, 99 प्लस हो गई थी वो. मैं उनको अपनी स्पिरिट गाइड बोलती हूँ. तो आपके पेट्स होते हैं, अगर वो die, if they died, if they lost, you lost them, they are your spirit guides. Angels are basically energies. They are energies and they speak also. They communicate also. My people, if anybody is here from the strong minds, we all know how angels speak to us. They speak to us through
lot of different signs. You will see birds, you will see insects, you will see butterflies, you will see numbers, you will see coincidences, you will see lot of there are a lot of ways that angels communicate. मेरे साथ एंजल्स हमेशा से थे, क्योंकि मैं जो भी बोलती हूँ, एज यू सेड इंट्यूशंस भी है, मुझे वो बोलते थे और मैं आगे बोलती थी. तो अभी ऐसा हो गया है कि दिस ब्यूटीफुल डेक इज विद मी. ये फिजिकल फॉर्म में है. आप मतलब मैं लोगों को बोलती थी, अब मैं उनको दिखा देती हूँ. सो इफ अ कार्ड सेज सक्सेस, that means angels have sent you a message that the success is coming to you. So we will be doing a surprise session for, you want to do now? Do we have Okay, anybody's we question? You can. want to pick anybody? So you can just take the question from someone and message me here. I'm watching it, and I'll take the card. So this is what you So there's this get. so the, so there's this question from the same numerology chart. The Okay. question is, when do they happen to get married and how soon? Okay. The person is not married and Not wanting to yet. get married, right? Okay. Right. Thank you. Thank you. Thank you, Archangel Michael. Thank you, my guardian angels. Thank you, my spirit guide, for this moment. Be with us in this moment and guide us through to the any hopes, answers, doubts that my people has. Be with me so that I guide them fair, right, and uplift their lives for the good. Thank you for being with me in the moment. Can I have the name of the person? Yeah. Okay. I hope the person is here live with us. I guess so. May I ask the person to also call his or her guardian angels? That's a female, right? Hmm. Yeah. So please call your guardian angels along here. I always invite them to be, because both angels come together, because आपके angels आपके लिए काम करते हैं, आपको answer करते हैं. Okay, somebody is writing. Okay, I love crystal. Okay, who doesn't love crystal? Those who don't know about crystal, उन्होंने जिया ही क्या फिर, मुझे तो ऐसा लगता है. Okay, so I'm taking out a card, and I say this person wants to know when is the right time. Please guide us for getting settled and married in life. Oh my God, who is this lucky person? Who is this lucky person? Wow. Who is this lucky person? Whoever the lucky person is, this is the perfect timing. So, am I invited? Whoever the person is, am I invited? Please sponsor my tickets. If you're not from Bombay, please sponsor my wedding dress and my flight We've shared tickets. your number. Hopefully the person will. Yes, yes, yes. It's a beautiful feeling. My people are crazy about angel card reading. So, the beautiful lady here, this is the perfect timing for the situation you have asked about. Move forward with confidence. Don't delay or hesitate, because an energy gateway is presently open for you. See, when it says an energy gateway is open for you, that means your angels have already opened the gates for you, and this is the perfect timing, and you should not delay, and you should not हेजिटेट और पुट एनी काइंड ऑफ डाउट्स. मैं तो डाउट्स वैसे भी किसी को भी लाइफ में डालने नहीं बोलती. मैं तो बोलती हूँ एंजल देने के लिए बैठे हैं, यूनिवर्स देने के लिए बैठे, बिंदास मांगो जो चाहिए. कंडीशंस आर राइट. वाओ. इवन इफ यू डोंट फील प्रिपेयर्ड, फॉरगेट इट. हो जाएगी सारी तैयारी. एक फोन कॉल पे शादी का पूरा मंडप रेडी हो जाता है. ओ, आई एम गेटिंग टू डू भांगड़ा. सो हैप्पी. रेस्ट assured that you are. So
You ready? Angel says you're ready. The timing is perfect. Whoever this lucky person is, I'm so happy for you. Please go ahead. Wherever you get stuck, take my number. I'm there with you. Don't worry. And all the best. All the best. Good luck. Smiles. Awesome. Whoever this person is, please smile and send me a picture if you can on my number. I'm So, happy. I'm happy. I know why I'm happy. so this Okay. means that it's the right time and it can happen anytime soon, correct? It can nahi. It is asking you, telling you that this is the right time. So nobody is asking anybody. It's in command, it's an order. I don't Okay. I'm very possessive about my cards and my reading. When it says perfect timing, you're not supposed to give a second thought to it. जिसकी भी शादी है, कल से सुबह से शुरू कर दो तैयारी. एंजल्स ने हामी भर दी है. एंजल्स ने गेटवे ओपन कर दिया है भाई आपके लिए. गेटवे ओपन मींस ब्लेसिंग्स का भंडारा आएगा आपके लिए. आपके कोई काम रुकेगा भी नहीं आपका. ये भी समझ लेना आप. कुछ भी अटकेगा नहीं कहीं पर भी. जस्ट गो अहेड एंड गेट Understood. मैरिड. Understood. Understood. We have one more chart quickly if we can look into that. That's another request Sure, because it's Women's Day series and I'm just taking from females only. The that's so date of mean. birth is, yeah, the date of birth is 21st December 1985. I'll forward you that. Please give me the name also. 21st. December 1985. 3 नंबर का इंसान है ये. प्लीज गिव मी द नेम. Yeah, I've shared it just for you with you. गिव माय फोन. Okay. Am I supposed to say the name or I'm not supposed to? Let's avoid that. Okay. Okay. Mm, the female also doesn't have a 6. Triple two. Very sentimental person. Very sentimental person. Very hypersensitive person. टेम्पर भी है. विल पावर करेज माशाल्लाह है. ये इंसान जो भी है गिरेगा फिर उठेगा. बट अगेन एज आई सेड, मेटल एलिमेंट मिसिंग है. 6 नंबर मिसिंग है. 4 नंबर मिसिंग है तो प्रोडक्टिविटी का थोड़ा सा इशू रहेगा. ओके. नाउ दिस पर्सन ऑल्सो हैज मंगल की महादशा एंड राहु की दशा. सो थोड़ा ये इंसान रिस्क लेंगे. थोड़ा एडवाइज्ड है कि प्लीज सोच समझ के रिस्क लेना जो भी लेंगे. प्लीज प्लानिंग के साथ रिस्क लेना जो भी लेंगे. एंड एज आई सेड, मंगल की महादशा है. आपको ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज करनी है. आपके लिए सबसे अच्छी एडवाइस ये है कि आपका जो भी सामान जो आप अब यूज नहीं करते होंगे, बिकॉज यू आर अ फीमेल. फीमेल्स के पास बहुत सारी चीजें होती हैं. राइट फ्रॉम योर स्क्रंचीज, योर हेयर बैंड्स, योर नेल पॉलिश, योर लिपस्टिक, योर कुर्ती, योर एक्सेसरीज, your shoes, your handbags, anything that you are not using and is in good condition, please go and donate it yourself to a very needy person. If you do that, you will get financial gains. You will get the blessings of Mangal. Do donate moti choor ke red wale laddu to Hanuman ji on Tuesday. That will really help you. Keep your temperamental little cool. Don't get triggered to things very easy. थोड़ा सा शांत रखेगा अपना दिमाग, क्योंकि राहु भी आपको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा बना रहा होगा इस वक्त. तो whoever the person is, advise to make a chart with me because you need it at this time. And She if you're plans not to have a child. That's one another specific question. So, okay, any so guidance on child that is front? definitely an issue because शुक्र नहीं है. She needs to work on her शुक्र, because जिसका शुक्र नहीं होता है वहां पर conceiving में भी issue आते हैं. She needs to work on her shukra and she need to strengthen her shukra. As I said, आप शुक्र बीज मंत्र करना शुरू कर दीजिए, which is very good.
फ्राइडेज आप अपने लिए शॉपिंग फ्राइडेज को करिए, आप अपने लिए कॉस्मेटिक्स स्पेसिफिकली फ्राइडेज को बाय करिए, और एज आई सेड परफ्यूम खरीदिए, परफ्यूम प्लीज किसी को गिफ्ट मत करना। एंड टू द अर्लियर पर्सन ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि वो मिक्स मेटल वॉच पहने। इनको भी वही करना है, गोल्ड एंड सिल्वर की मिक्स्ड। आपको तो मैं सजेस्ट करूंगी या उनको भी सजेस्ट करूंगी, चलो इफ दे आर वर्किंग इट्स डिफरेंट थिंग, बट अगर नहीं वर्किंग है तो शुक्र को बेटर करने के लिए प्योर गोल्ड की वॉच हो और वाइट डायल हो। ऐसे बहुत सारे रेमेडीज हैं, आई कैन गिव यू लॉट ऑफ देम, बट इनको डेफिनेटली सी राहु घर बनाता है, राहु बच्चों पे थोड़ा कम काम करता है, और वहां पर मंगल है ना। तो अभी आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट एनीबॉडी, बट this is not the right time for conceiving, but there are crystals which have worked wonders, and many of my people have got pregnant with a lot of remedies, guided remedies, personal guided remedies, and the combination of crystals for them. Please book a crystal for pregnancy, I can do that for you, plus I can help you with the guided remedies also for shukra, but you need to work on shukra। जब तक आप शुक्र पे बहुत अच्छी तरीके से उसको स्ट्रांग नहीं करेंगे, थोड़े से ये वाले इश्यूज आपको रहेंगे। इसका Bang on. अदर एस्पेक्ट भी है विच आई कैन नॉट शेयर इट नाउ, बट रहेंगे वो इश्यूज, तो वी नीड टू वर्क ऑन द शुक्र, not Fair immediately, enough. I will help you otherwise अगर आप you want to connect to me, or you if you have anybody who can help you in this अगर, but मैं सजेस्ट करूंगी कि बहुत ज्यादा कुंडली किसी को मत दिखाना, बिकॉज वो बहुत ज्यादा घुमाते हैं चीजों को, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में डालते हैं, आपका ये है, आपका वो है, आपका वो है। न्यूमरोलॉजी इज स्ट्रेट, आपको भूख लगी है, ये लो खाना, ऐसा है। आपको आप आई डोंट वांट टू टॉक नेगेटिव अबाउट एनीबॉडी, बट न्यूमरोलॉजी इज स्ट्रेट एंड इजी and very very effective. I have been able to change lives magically with numerology, magically, myself too. I it starts with me, starts with my family, my friends, and my people of the strong minds. I have lot of success stories to share. Yes. Well, I'm pretty sure you have impacted lots of lives, and well, that's why you are one of those acclaimed numerologists, tarot card reader, and million other things you're blessing the world with. चलते चलते एक सवाल बस पूछना चाहूँगा, for all the women out there, since we are celebrating Women's Day, uh, there are times, women tend to think low of themselves or ask low for themselves. कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ compromises कर लेती हैं, or maybe the housewives who want to step out, do something for themselves, maybe the conditions are not favorable or they don't believe कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। ओवरऑल आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता कि किसी औरत को ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकती है। uh, मुझे नहीं लगता ऐसी किसी औरत को लगता है, बिकॉज आई एम वेरी सेंसिटिव व्हेन इट कम्स टू द टॉपिक ऑफ अ वुमेन। हाँ, मेरे को एक चीज पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जब वो अपने आप को बेचारी बोलती है, बिकॉज आई ऑलवेज टेल वुमेन यू आर अ क्रिएटर, यू आर अ क्रिएटर, है ना। वी आर अ क्रिएटर, हम जिंदगी बनाते हैं, तो हम बेचारी कैसे हुए। I know women who is widow, who is uneducated, who is highly educated, who is a businesswoman, who is a working class, who is doing things from home. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई बेचारी है। हाँ, अपने आप को आप लोगों ने खुद बैकफुट पे डाला हुआ है, बचा हुआ खाना खा लिया, बच्चे ने छोड़ा, हस्बैंड ने छोड़ा, वो खा लिया, ये खा लिया, नहीं खा लिया, काम में लग गए। हाँ, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वुमेन नीड्स टू really be very serious about in life. Yes, taking care of herself, I always say जो एक औरत कर सकती है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। Not putting men down, everything is same, यहाँ men women वाली बात ही नहीं है, because it's women's day, we are talking about women, but it's सिर्फ genitals अलग हैं, बाकी आदमी भी वही है और औरत भी वही है, दोनों में फीलिंग्स भी वही है, इमोशंस भी वही है, जरूरतें भी वही है, एक्सपेक्टेशंस भी वही है, सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है। आपने अपने आप को बेचारी बनाया हुआ है, विच आई डोंट लाइक टू ऑल द वुमेन। नोबडी इज बेचारी। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर होम मेकर्स, फॉर हाउस वाइफ्स, बिकॉज मैं 1% भी नहीं हूं उसका। देर आर वर्किंग वुमेन जो घर का करके भी बाहर जा रही हैं और वापस आके भी घर का कर रही हैं। उनको एक बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है, डोंट ओवर डू थिंग्स, बिकॉज you're taking it on your health, you're taking it on your body, mind and soul. Don't do that. If you're earning, plan an amount and keep a maid or a helping hand for yourself, because आप सुपर वुमेन ना बने, क्योंकि आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, आपका शरीर, दिमाग, सोल थकता है। तो प्लीज अपने लिए एक हेल्पिंग हैंड रखें। आप जितना अपने लिए हेल्पिंग हैंड रखेंगे, आपका आउटपुट उतना अच्छा होगा।
बिकॉज घर का देखना और बाहर का देखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. हम ओवरडू करते हैं ये सोच के कि उस खर्चे में हम दूसरा कोई खर्चा कर लेंगे, तो आप अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हैं, वो मत करिएगा. प्लस आई से ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हाउस मेकर्स, बिकॉज बाप रे, घर का काम इतना होता है. और कोई ऐसी बात नहीं है कि ये वर्किंग वुमेन है तो ये स्मार्ट है और ये अच्छी है और ये घर पे रहती है तो ये ऐसी है. नो, आई नो वुमेन. आई हैव माई ओन ग्रुप एज द स्ट्रॉन्ग माइंड्स फेम, जहाँ पे मैं हर एक इंडिविजुअल वुमेन से बहुत प्राउड हूँ. वो बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, घर से भी कर रहे हैं. आई हैव वुमेन नियरिंग एज 60 जो घर से टिफिन सर्विसेज करके भी कमा रहे हैं, जो घर से डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स करके भी कमा रहे हैं. I say there is no बिचारी. Please, only thing is you need to take extra care of yourself because आपका आउटपुट जो है वो आपकी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. आपकी केयर टेकिंग जो एक फैमिली को लेके चलने की ताकत आप में जो है वो किसी और में नहीं है, और वो बहुत जरूरी है फैमिली को लेके चलने के लिए. प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. ऑसम, ऑसम। चलते चलते बस एक सवाल, एक शब्द और एक जवाब। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ इन जस्ट वन वर्ड? I'm power. वाओ। I'm power. I'm power. Yes, you can say that. I mean, I feel myself. I'm an energy person, so I'm an energy. People say that wherever I am, like it sparks. Uh, I think I'm an energy. The energy that I pass with love, care, respect, understanding, uplifting, kindness, being grounded with everything. So I think I'm an energy. So I would love to become an angel one day and just go and touch people and then bless their lives so good magically. उनको पता भी ना चले कि मैं उनकी लाइफ में गई, मैंने उनको छुआ और उनकी लाइफ एकदम से ब्यूटीफुल हो गई. So I would love to become an energy. Well, what you said is bang on, because the kind of messages I am getting personally, you're high in energy and the session seems hijacked with immense power and energy today. Pleasure, gratitude. I'm so excited because I'm just right opposite to my best man. There are very few. My son calls me a feminist, by the way, because मैं औरतों को लेके थोड़ी बहुत ज़्यादा sensitive हूँ. But there are few men, I should say, there are few men who I look up to with huge respect and बहुत प्यार. उसमें से एक संदीप बोगरा है, because ये इतना अच्छा gentleman है. I am a very keen observer about everything that other person is. जब वो मेरे सामने होता है मैं बहुत बहुत deeply observe करती हूँ. Lucky will be the lady जिनकी भी life में इनके जैसे मर्द होंगे. Let me precisely use this word मर्द होंगे, because yes, life has been a little sad for few of the lives because of not having the right man in their lives. But let me now tell you, I have a best friend, a life coach, a marriage relationship coach. मैं बोलूंगी कि जिसको भी कोई प्रॉब्लम है प्लीज रिश्तों को खत्म ना करें. एक बार संदीप से कनेक्ट करें, एक बार इनसे बात करें. आप देखिए कितना हम्बल इंसान है, मतलब ये किसी की लाइफ को यू बूम कर देगा, और जहां ये कम पड़ेगा वहां मैं आ जाऊंगी. तो प्लीज गेट इन टच विद हिम, प्लीज स्टे कनेक्टेड टू हिम. ही इज अ पॉजिटिव पर्सन, इज अ लविंग पर्सनैलिटी. कितना शांत, ग्राउंडेड, हम्बल. रिश्तों को खत्म मत करिए. हम दोनों दोस्त हैं आप लोगों के लिए. लाइफ इज ब्यूटीफुल, क्योंकि रिश्ता टूट के दूसरी जगह जाना भी वही सिलसिला रहेगा. Nobody is 100% perfect, let me tell you that. Nobody is 100% perfect. If you keep looking at the perfection, then you will be left alone in the life. So don't look at the galtiyan or the kamiyan. Look at the beautiful part. Look at beautiful both of us. We are uplifting lives. We are sharing smiles. We are blessing people's lives, and we are so happy and we are so positive. इसमें ज़रूर एक बात यहाँ ऐड करना चाहूँगा, दैट एवरीवन डिजर्व्स टू बी हैप्पी इन लाइफ। और Yes. मेरा ये मानना है, हैप्पीनेस इज समथिंग you must always keep on priority, and Yes. your self respect along with it. So be happy Self-respect whether is something within that a I'm very, very relationship. particular about. Very So be particular. happy whether in a relationship or out of Yes. it, because sometimes when you're in a toxic relationship, जो एक बहुत बड़ी 100%. realization बहुत देर से आती है, बट जो कहीं यहाँ ना पर कहीं मैं लोगों को चैलेंज क्योंकि हम करती वुमेन्स डे पे हैं संदीप, आई वुड लाइक टू टेक योर ओपिनियन हियर. नाउ लेट्स चेंज द सीट्स. I want you to answer me one question कि most of the women basically do not
take hard decisions of quitting from the relationship is because they feel कि वो बच्चे लेके कहाँ जाएंगे, वो उनको कैसे पालेंगे, because mothers cannot leave their children behind and go. या फिर बच्चे नहीं भी हैं तो उन कई मैंने औरतें ऐसी देखी हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं है, और कई तो ऐसी भी देखी हैं संदीप जिनके पेरेंट्स ही उनको उन टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने नहीं देते. सो व्हाट एडवाइस यू हैव फॉर दोज वुमेन जिनको ऐसा लगता है कि मैं ये रिलेशनशिप से निकल गई तो मैं रोड पे आ जाऊंगी, मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगी? So can you please advise us something on that? Well, I feel privileged and blessed to have worked with people from across the globe, over 20 plus countries, and 80% of my clientele are females, Wow. right? और उसमें से बहुत से केसेस अक्सर आते हैं, दे आर स्टक इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, जिसका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उन्हें पता ही नहीं है दे आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप. नंबर वन. Yes. Yes. That's Number right. one. Number two, all their conditions which they believe are so difficult for them to step out of that relationship are actually not that difficult. So, what is required is to understand that you get life just once. Happiness is your birthright. You deserve it at most, whether in a relationship or out of it. Correct. और फिर भी अगर किसी को डाउट है, feel free to read this. This is my Yeah, bestseller that's book written on by him. Amazon. That's written by him, guys. That's the book written by him. Yes, we all. मुझे भी कॉपी भेज देना. I Just to feel read I've the mindset of my friend. Would love to. टॉक्सिक रिलेशनशिप या डिवोर्स एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है, आउट ऑफ फियर ऑफ द सोसाइटी, और मे बी Yes. सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस डर और इस फियर से हम अक्सर इस Yes. रिश्ते में और इस तरह के सिचुएशंस में कहीं ना कहीं फंसे रह जाते हैं. तो Correct. मेरा ये मानना है, यू ये गेट भी लाइफ जस्ट ये वंस, भी मैं एक मेक द बात मोस्ट बताऊं ऑफ इट. आपको संदीप की, मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉक्सिसिटी का लेवल भी ना, ये भी कपल्स की गलती है. आप वहां तक पहुंचने तक ना ये दोनों तरफ की गलती है, क्योंकि मैंने फिर वही कहा ना कि सहने वाला सहता रहता है और करने वाला करता रहता है. जो सहता है वो बोलता नहीं है, तो दूसरा जो है वो ओवर पावर करता रहता है, और फिर एक लेवल ऐसा आ जाता है कि यू ब्लास्ट. तो आई थिंक इट्स अ उसका भी रीजन प्रोसेस. कहीं ना कहीं जो मैं अक्सर वर्ल्ड वाइड आई से इट ओपनली ऑन टीवी एंड वेरियस अदर सोशल मीडिया forums that our education system has taught us everything in terms of skill set for a job, business, profession, science, commerce, every field around. करेक्ट. But it रिश्ते somehow ही failed समझ नहीं पाया. to tell us about the most crucial transition in our life, that is marriage. यस. मैंने बोला पता है क्या होना चाहिए, लड़कियों को मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के साथ पहले मिलाना चाहिए, उनके साथ पहले डिस्कशन करना चाहिए, फिर लड़के से मिला के उससे बात करनी चाहिए. आई वांट टू चेंज दिस प्रैक्टिस. क्योंकि एक Well, हस्बैंड जो होता है ना वो बेचारा संभाल लेता है फिर भी. हस्बैंड्स आर रियली, मैं सच बताऊं, अगर वुमेन्स डे है बट आई वांट टू से दिस, सबसे सॉर्टेड प्राणी बनाया है भगवान ने आदमी. सबसे सॉर्टेड. ना बिचिंग करता है, ना गॉसिपिंग करता है, ना लड़ाई करता है, ना झगड़ा करता है, ना उसको किच किच पसंद है, ना आर्ग्यूमेंट्स पसंद है. बस एक थोड़ा सा डिफेक्ट है, ईगो दे दिया एक्स्ट्रा, वो थोड़ा well, सा. I'll prefer to say something gender neutral based on my experience with people and so many clients worldwide. It is irrespective of a male or a female. करेक्ट. मेरी पहली बात ये मानना है. दूसरा, कहीं ना कहीं, as one of my friends says, if you get the right person, you're complete. Which is If you very get the wrong difficult. person, you're Which finished. is very difficult. So, so it doesn't matter, whether it's a male or a female. If you are not Absolutely. treating your partner well, Yes. the relationship will definitely go to hell. Yes. Absolutely correct. मैंने वही बोला ना कि ये भी एक प्रोसेस में होने देने के लिए, तो मैं वही बोल रही हूँ कि बहुत पहले अगर आप स्टॉप कर देते हो, या बहुत पहले आप बोलते हो कि संदीप दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट लाइकिंग, will you please stop it, or will you please change it because it's upsetting me, it's hurting me, then only Sandeep will know that she's not liking it, है ना. आप चुप रहोगे चुप रहोगे चुप रहोगे, फिर एक दिन बोलोगे कि आई वांट टू गो बैक, पैक माय बैग्स एंड गो. दैट इज नॉट डन, दैट इज नॉट राइट. एंड एज आई से एवरीबडी इज डिफरेंट, दो डिफरेंट फैमिलीज, दो डिफरेंट कल्चर, दो डिफरेंट अपब्रिंगिंग के लोग एक साथ आके एक जैसे कैसे ही हो सकते हैं. इट्स नॉट पॉसिबल. देयर इज द टर्म कॉल एक्सेप्टेंस. दोनों को एक्सेप्टेंस करना है कि हाँ हम दो डिफरेंट लोग हैं. ओके, संदीप को क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है, ओके आप पहले आपका कर लेते हैं, फिर हमारा कर लेते हैं. इट हैज टू गो दैट वे. Well, there are so many things to it, और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं I think we can I have am one live on that also. It's going to be like fun.
डेफिनेटली, और इसीलिए कहीं ना कहीं आई हैव प्लान्ड टू रोल आउट सम recorded courses on relationships, क्योंकि Very good. everybody cannot reach out for one on one consultation to me Yes, due yes, to yes. You should. time, money and various other reasons. So You they should. will also be benefited on a larger scale. So I'm coming soon with my recorded courses, जिसमें मेरा Very good. personal interaction भी रहेगा कहीं ना कहीं, and the Very only good. idea Very is to educate the world good. around relationships. It's needed. It's need of the hour है ये. Please go ahead. All the best. Don't stop. Coming soon. Perfect The timing. gateway is open, As as you said. 1 Perfect p.m. timing. Perfect timing for everything. You should be so Absolutely. happy now. Yeah. Great. Hmm. So thank you once again for, we've taken a lot of time than we thought of from you today. It's been more Thank you. than 1 hour almost, but the audience loved it. They've glued and Thank you. stayed connected till the end. That's the best thing. Thank you so much. Thank अंत you so भला much. तो सब Pleasure. भला, और बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक बार हमारे शो पर आने के लिए. Pleasure. Tomorrow is Anytime. the Women's Day. Of course, I'll be happy to wish you You personally. will. You don't miss any of the wishes. That is why I said I love you. You're such a nice person. I'm so bad friend. I never message back, or I like. I'm not the first person to wishing, but then you are. So और एक छोटा सा अपडेट हमारी लवली ऑडियंस के लिए. टुमारो नाइट इट्स विमेंस डे, और कहीं ना कहीं मेजर पार्ट्स ऑफ द कंट्री हम होली भी मना रहे हैं. सो सिर्फ कल रात हम 8 बजे की जगह रात को 10 बजे, when you will be comfortably settled after your dinner, is yeah, when we are going to connect with someone who's a mega influencer on social media. very And good. how did she become one? Well, she's been guiding people across the globe in terms of image, personality development, and she has taught the who's who's of the community, like the IFS officers, the Indian diplomats, and lots more. That is why I say women are creators. That is why I say women are rock stars. I always say that. So I'm so it's proud to time be to a meet woman. yet another rock star tomorrow night at 10 p.m. And until then, good night, Shubh Ratri, Shabba Khair. Do take very good care of yourself. Love you all. Bye bye. Thank you for watching us. Thank you for being with us. Thank you for giving me chance. Thank you. Love you. God bless you, Sandeep. Pleasure, pleasure, pleasure for this evening. Thank you. Shukran. Bye bye. Bye bye.